हेलो, नमस्ते। अभी हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कॉमन पेपर है, जो 2 अगस्त को हुआ है। ये इसका यूनिट सीरीज़ ए है हमारे सामने। ए सीरीज़ का पेपर है ये, इसको हम चर्चा करेंगे और ताकि एक आइडिया भी आपको मिले और अगर आप मध्य प्रदेश के बाकी एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये आपको हेल्प करेगा। ओके। सो थोड़ा सा डिटेल हम डिस्कशन करना चाहते हैं जिससे ओके। सो वी हैव एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और हम कोशिश करेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में इसकी चर्चा करें ताकि अच्छा एक तो क्या हम ऑफ कर देते हैं कैमरा। यस, आई थिंक अब ज़्यादा क्लियर है। प्रश्न संख्या 1, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ओके। हम्म। थिंक आवाज सही आ रही है। हम्म। आवाज भी क्लियर है और अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात हैं? सो इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। हाँ। सो अकॉर्डिंग टू census, according to the 2011 census, which district in Madhya Pradesh has the highest sex ratio? So we have some numbers about it. Uh, First of all, you know, मध्य प्रदेश में
कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका लिंगानुपात ज़्यादा है. On the given option, Balaghat is right answer. So, according to the census 2011, so Balaghat have 1021 female over 1000 male. Okay. So district record the highest sex ratio in Madhya Pradesh. And in the second one, which we also can consider, the second one is Alirajpur. Alirajpur. Alirajpur, followed by around 1011 female over 1000 male. Okay, so यहाँ पे भी surplus है. Okay, Balaghat is one. Second is Alirajpur. So in the given option, we also have option of Dindori. Dindori have third option, Dindori, which have 1008 female over 1000 male. No, there is some mistake. So actually that Mandala have the 1008, Mandala 1008, and the Dindori have 1002 over 1000 male. So, and that another, so if that exam also have asked about the poorest or the lowest sex ratio in the state, so we have another option, which Bhind. You might familiar with Bhind. Bhind district have 837 female over 1000 male. And overall state sex ratio is मध्य प्रदेश का एक औसत लिंगानुपात क्या है? 931. 931 is the average sex ratio of Madhya Pradesh over 1000 male. तो यहाँ पे कमी तो है. Okay. The second option, which we are going through, discuss through which district of Madhya Pradesh does the Indian Standard Time line 82 degree 31 minute east longitude pass? Okay, so for such kind of question, if you want to tackle these kind of question, you have to remember the Madhya Pradesh map. Okay, you should be aware about that. So, I think if we look on Madhya Pradesh map, so we have western part of Madhya Pradesh have Alirajpur. Alirajpur near Jabua, है ना? And the eastern part of Madhya Pradesh, eastern part, we have Singrauli. Okay. So think about this question. So the Indian Standard Time, IST, जिसको कहते हैं हम IST, Indian Standard Time कौन सा है? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री और 30 मिनट. East longitude passes through only one district of Madhya Pradesh, which is actually Singrauli. So if you look on that Singrauli to Alirajpur, how many minute difference?
34-minute time difference from IST, Indian Standard Time. Okay, so you and also that you might familiar with that another fact, Singrauli, which is the eastern district of the state, it was carved out of Sindhi district in 2008. Due to this geographical positioning, there is a time difference, roughly 34 minutes. Okay, between Singrauli east to Alirajpur, which is western part of Madhya Pradesh. So we have third question. This is a very interesting question, and which that question is related to local government. Okay, so consider the Gram Panchayat Committee in Madhya Pradesh. Consider the Gram Panchayat Committee in Madhya Pradesh. Okay, Gram Panchayat Committee मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें देखना है उसके काम को लेकर के, है ना, कौन कौन से फंक्शनिंग थिंग्स व्हिच द कैन डू. सो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमिटीज, हाँ बिल्कुल सही बात है. नियोजन और विकास समिति, फाइनेंस कमेटी, नो. एमपी के जो ग्राम पंचायत कमेटीज हैं उसमें अंडर सेक्शन 46 ऑफ एमपी पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अभियान 1993, gram panchayat from standing committee such as general administrative committee, and so that administrative committee also they have power to analyze them, and the construction work committee, so yes, they also have the power. So they do not specifically a specific independent financial committee does not exist at the gram panchayat level in MP. So if you turn this case in the example of UP, so they have some limited power of financial committee too. So in the question they already have mentioned about MP. So what is the answer? So which of the above is or are not ग्राम पंचायत कमेटी? कौन सा उसमें से नहीं है? So second one है ना, so B will be the right answer. Only 2 is not right. Okay, are not the committee of MP ग्राम पंचायत. Okay, you might आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा. अच्छा, another we have a very interesting question which now consider the following pairs, है ना. अब इन्होंने कहा कि भी इसको सुमेलित कीजिए. So article 153, I also have a constitution book right now. So article 153, governance of state. Okay, so in the Constitution of India we have from the article 152 से जो है ये state का शुरू हो जाता है, which part 6 यहाँ से शुरू होता है 152 से. तो हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 153 गवर्नेंस ऑफ स्टेट. क्या इसके बारे में है? यस, आर्टिकल 152 में जो है उसमें डेफिनेशन बताई है, ठीक है. और आर्टिकल 153 में which they have provision governors of state. So this is right match. Okay, one is right match. The second one, article 155, term
of office of governor. Term of office of governor. So actually आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है. ओके, ये क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. सो दिस इज नॉट मैचिंग. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 156 में है. तो ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल कंफ्यूजन वाले हैं. So Article 156 is the term of office of governor, and but Article 155 is the appointment. 155 is appointment of governor. The governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. ठीक है. थर्ड जो स्टेटमेंट है which Article 157 conditions for the post of governor. Article 157 is the qualification. Okay, not the condition. Qualification for appointment as governor. No person shall be eligible for appointment as governor unless he is a citizen of India and has completed the age of 35 years. ओके, तो ये समझ में आ गया आपको? ये कौन सी ये 157 नहीं है. 157 क्या है? क्वालिफिकेशंस है ना. क्वालिफिकेशंस में दो चीजें हैं कि 35 साल की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो. और कोई इसमें एलिजिबिलिटी है? नहीं, कोई एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है. आर्टिकल 159, तो ये मैच हुआ कि नहीं? नहीं हुआ. ओके, सो आर्टिकल 159 of Indian Constitution, oath or affirmation by governors. Oath or affirmation by the governor. ओके, सो ये राइट है, ये मैच हुआ. अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ गवर्नर शैल बिफोर entering upon his office make and subscribe in the presence of the Chief Justice of High Court exercising jurisdiction in relation to the state, or in his absence the senior most judge of court available, and oath or affirmation in the following form, that is to say. क्या? I, जैसे मैं हूं तो मैं बोलूंगा कि I मनीष do swear in the name of God solemnly affirm that I will faithfully execute the office of governors or discharge the functions of the governor of name, मान लीजिए मैं राजस्थान बोलता हूँ, नेम ऑफ स्टेट राजस्थान, एंड विल बी द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of people of Rajasthan. Okay, actually I am from Rajasthan, so I cannot be governor of Rajasthan, so but I have mentioned this. तो इसमें ये हमने ज़्यादा डिस्कस किया. What should you understood that option statement 1 and 4 is correct. So in this question, how many of the above pairs is correctly matched? तो दो हो गए, दो पेयर मैच हुए, बाकी दो मैच नहीं हुए, तो ये हो जाएगा. Okay, so now the second next one, question number 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 अंग्रेजी में, which of the following statements are correct about मध्य प्रदेश लोकायुक्त? ओके, मध्य प्रदेश लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन. तो अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है?
मध्य प्रदेश लोकायुक्त के संदर्भ में. Okay, so the Lokayukta organization came into in March 1982. Okay, so actually it is not correct. सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है इसमें, इसको फरवरी कर देते ना तो ये करेक्ट हो जाता है ना. फैब 1982 में एग्जिस्ट आया, okay, into exist in February 1982. So that they already intentionally have mentioned March in the statement. So this is not correct. Option A जो है ये statement A is not correct. Okay, so why? Because of the February 1982. It is constituted under Madhya Pradesh लोकायुक्त एवं अप लोकायुक्त अभियान 1981 Act. Correct, correct. This is correct answer. Okay, this is correct statement. The Lokayukta organization replaced the Vigilance Commission. It replaced the old State Vigilance. Yes, State Vigilance Commission को इसने replace कर दिया था, बाद में लोकायुक्ता बना 1982 में. Correct. This is also correct answer. The Lokayukta organization is totally free from the executive influence. The Lokayukta organization is totally free from the executive influence. हाँ, इसको कार्यकारी प्रभाव से इसको एक्चुअली एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से फ्री रखा गया था, टू बी फ्री एंड द करप्शन फ्री, है ना. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो 2, 3 and 4, 2, 3 and 4. तो ए अगर गलत हो गया, ए गलत हो गया तो ये हट गया, ए गलत हो गया तो ये हट गया, ए गलत हो गया तो ये हट गया. तो अगर इफ यू आर वेरी अवेयर अबाउट द मार्च एंड फेब्रुवरी, so you might have that उसके बाद में उतना इंफॉर्मेशन नहीं भी हो तो भी आप you will be able to correct this answer. Okay, so C is the right answer. Only 2, 3 and 4 are correct. Okay, so now we have which tribe inhabits पातलकोट छिंदवाड़ा. पातलकोट छिंदवाड़ा में कौन सा जो ट्राइब है वो इनहैबिट करता है, रहता है. ओके, सो actually that answer is Bharia, and I should explain this why this is correct answer. So the deep horseshoe shaped valley of Patalkot in the Tamia block of the Chhindwara, कौन सा है? Tamia block of Chhindwara is the ancestral home of भारिया, है ना. उनका एंसेस्ट्रल मतलब होम माना जाता है. दे आर reorganized by the government of India as the particularly vulnerable tribal group, है ना. PVTG जिसको कहते हैं, जो इनको विशेष प्रिजर्वेशन दिया जाता है, तो सपोर्ट किया जाता है. मोस्ट particularly vulnerable tribal group, PVTG. कौन से साल में? 1981 में. PVTG. देखो भाई, मध्य प्रदेश के ये सवाल जनजातियों से जुड़े हुए बहुत आते हैं. In the year of 1981 census, they were famously labeled as the wildest of the wild, है ना. ये किसमें लेबल किए गए, नाम क्या दिया है इनको? जंगलियों के भी जंगली. मतलब ये दे आर वेरी a kind of ancestral of that particular area. So the wildest of wild, जंगलियों के भी जंगली, due to their
एक्सट्रीम आइसोलेशन, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों से आइसोलेशन में रहते हैं, आम लोगों की तरह नहीं रहते हैं. So when did the publication of Vanya, an important publication of the Tribal Affairs Department of Government of Madhya Pradesh begin? अच्छा, इसमें पूछा है कि वन्या एक पब्लिकेशन है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उसके जनजातीय अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये कब शुरू हुआ था? So the Vanya has started in 1980. 1980. Option B is correct. So I should discuss about the Vanya. Vanya is a pioneer publication managed by the Tribal Affairs, preserving the indigenous art, dialects, है ना, आर्ट कला हो गया, डायलेक्ट बोलियां, traditions and literature of states, tribal communities. Its regular publication journey began in the year of 1980. Okay. So next we have question number 8. Karasdev is the folk legend from which region of Madhya Pradesh? Okay. Karasdev folk legend, which they are from Bundelkhand region. Okay. Bundelkhand region. So we should discuss about something. Karasdev is highly revered deity and the folk hero celebrated across the Bundelkhand region. He is traditionally worshipped as a protector of livestock and cattle. His heroic legends are sung by local communities during specialized religious rituals to keep village cattle herds safe from the disease and predators. Okay. So कारसदेव they are जो जीव होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनकी रक्षा के लिए जो गाने गाए जाते हैं, है ना, ये आपने सुना होगा. तो ये इनके लिए बड़ा सम्मान होता है लोगों में, जो लोग खास तौर से पशुपालक समाज और उनमें ये थोड़े ज्यादा प्रचलित हैं, बुंदेलखंड एरिया से रिलेटेड हैं. ओके. So question number 9, in which district of Madhya Pradesh was the one district one product summit organized in March 2026? So this is question of current affairs, है ना, current affairs का सवाल है. इसको क्या कहेंगे हम? ODOPS, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट मार्च 2026 में उज्जैन में हुआ था. ओके. So in alignment with the one district one product initiative aimed at boosting micro entrepreneurship, क्यों माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश होस्टेड मेजर हाई लेवल ODOP summit in March 2026 in holy city of Ujjain to promote regional artisans, clusters, processing units, and global market linkage. Okay. So next जो question है, question number 10. We have question number 10. Which of the following stores both the historic and transactional data? ओके. ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT से पूछे हुए सवाल हैं. ICT अगर आपने पढ़ा होगा, हमारे लगभग शायद 10 यूनिट में 10th यूनिट में ही है, ये शायद 5th या 10th यूनिट में है. ओके. MPPSC स्टूडेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखेंगे तो उसकी लास्ट यूनिट है पेपर 1 वाली. तो इसमें है which of the following stores both the historic and transactional data?
सो वैसे इसका आंसर जो है वो डाटा वेयर हाउस है। हमें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये क्यों है। ए डाटा वेयर हाउस इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन्ड to consolidate, store, and manage vast historical data alongside current transactional records from multiple sources as well as standard operational like databases focus primarily on the real time. Okay, so ये primarily real time के लिए है and transactional data update data warehouse compile historical timelines to facilitate long-term business intelligence, forecasting, and the reporting. Okay, so option C is correct answer for this. So next question, according to the Jain scripture, Parishishta Parvan, from which Acharya did the Mauryan ruler Sampriti receive initiation into Jainism in Ujjain? ठीक है. So in the question number 11, initiation of Mauryan ruler Sampriti. So Acharya Suhasti was, according to the Hemchandra prominent Jain text जिन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा था, the Mauryan emperor Sampriti, जो grandson of Ashoka है, who ruled from Ujjain, converted to Jainism under the profound spiritual influence of कौन से आचार्य? आचार्य सुहस्ति. Sampriti went on to build thousands of Jain temples across Western India, earning fame as great patron of faith, especially in Jainism. Okay, so आचार्य सुहस्ति ने संप्रति को गाइड किया. Who conducted the execution of Navada Todi, a site of Chalcolithic Malwa culture? So ये तो आपको सब पता होगा. H.D. Sankaliya was the person who executed site of Navada Todi. Okay, so so we should also discuss about that the Navada Todi located on the southern bank of Narmada River near Maheshwar के पास में है. Okay, is the one of India's most significant chalcolithic, जो किसमें आती हैं? कॉपर स्टोन एज में आती हैं साइट में. Its extensive archaeological excavations were spearheaded by the renowned archaeologist Dr. H.D. Sankaliya of Deccan College, Pune, revealing valuable details about the Malwa culture. ठीक है, ये तो करेक्ट हुआ होगा. अब हिस्ट्री के स्टूडेंट होकर के इतना डिटेल तो आपको मालूम होना चाहिए. So which of the following statements are correct about Gram Sabha under the Panchayat extension to schedule area Act 1996? अच्छा, ये पेशा कानून का है, 1996 वाला पैसा. Okay, so they have the power to enforce prohibition. You should think before you answer. You should think about this. पेशा कानून में क्या उनके पास में प्रोहिबिशन का अधिकार है? यस, डेफिनेटली, ताकि वो अपने उनका जो एग्जिस्टेंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए. दे हैव ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. क्या उनके पास में जो छोटे क्या बोलते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने की ओनरशिप है? यस. दे हैव द पावर टू लीवी विलेज लेवल टैक्सेस. क्या उनके पास में
विलेज लेवल के टैक्स लगाने का अधिकार है? नहीं, ये नहीं है उनके पास में, टैक्सेशन वाला पार्ट नहीं है। दे हैव द पावर टू मैनेज विलेज मार्केट्स, यस, ये है। ओके, सो ए, दो और चार, तीन, तीसरा इज नॉट राइट आंसर। सो तीसरा राइट नहीं है, तो इसको हटा देंगे। एक, दो, चार, हाँ। सो आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। So we should also discuss about the Pesha Kanun, which famously known as the provision of Panchayati extension to the Scheduled Areas Act 1996 Pesha empowers tribal Gram Sabhas with significant autonomy under Pesha. They can enforce prohibition, regulate, annexure 1 में कहा है. They possess ownership rights over minor forest produce. तो ये annexure 2 में कहा है. ये आपका statement 1 is correct and statement 2 is correct. They manage village market. So and which they do not have taxation powers. Taxation framework generally follow up state legislative panchayat guidelines. So statement third is not correct. Okay, so उसके अलावा सभी correct है. Question number 14. Madhya Pradesh capital outlay is proposed to increase 27 in the budget of 25-26. दिस डिनोट, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा है कि भाई स्टेट बजट में कैपिटल आउटले को इंक्रीज किया गया है 27%। क्यों किया है? अच्छा, आप खुद सोचिएगा, इसका आप जनरली भी आंसर कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ एसेट, आई गेस यस, दिस इज द राइट आंसर एक्चुअली। सो क्रिएशन ऑफ रिहेबिलिटीज, नो। लाइबिलिटीज की देनदारी को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई क्यों करेगा, मतलब है ना, लाइबिलिटी को कोई क्यों बढ़ाएगा, इसके लिए वो इसको कैपिटल आउटले को इंक्रीज करेगा? नो, संभाल ही पैदा नहीं होता। अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांस, तो इसके लिए वो नहीं बढ़ा सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सिडी, की सब्सिडी बढ़ा रहे हैं इसलिए, अगर वो सही भी है तो भी इसको ये राइट में नहीं मानेंगे। तो ये आप शायद समझ गए होंगे। So in the public finance and budgeting economics, a substantial increase in the capital outlay indicate funds strictly allocated for the creation of long-term economic asset. Long-term economic asset. Okay. So this includes building critical infrastructure such as highway, dams, power plants, hospitals, and educational facilities that expand the productive capacity of the state. Okay. Next जो क्वेश्चन है वो हमारा एग्रीकल्चरल उससे है। So इंग्लिश में क्या है? So we have arranged the following crops on the basis of their production in 23-24 in the मध्य प्रदेश। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई उन क्रॉप्स के बेसिस पे आपको प्रोडक्शन 2023-24 के मध्य प्रदेश को जोड़ना है। ओके, तो इसके लिए आपको सेंसस देखना पड़ेगा और उस ईयर का, और पॉसिबल हो तो आप इकोनॉमिक रिव्यू देख सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं हम उसको। तो वीट प्रोडक्शन कितना 1000 टन हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ वीट प्रोडक्शन हुआ है 14,219। सो दिस इज करेक्ट। मेजी मक्का कितना हुआ है? मेजी हुआ है 32,896। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। राइस हुए हैं 4,932। सो राइस में सी में 4 हो जाएगा। टोटल फूड ग्रेन हुआ है 60,773, है ना, टोटल फूड ग्रेन। ओके, तो ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 4 और डी के सामने 3 रहेंगे। देखो कौन कौन से इसमें मैच हो रहे हैं।
तो ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 4, जैसा हमने ये बताया, ओके, और डी के सामने, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 है, an AI tool that filters the data by using algorithms and suggests popular products for customers is known as। अच्छा, ये AI टूल जो फिल्टर करके डाटा एल्गोरिदम से पॉपुलर प्रोडक्ट को कस्टमर को सजेस्ट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कौन से फील्ड में आता है? डेफिनेटली वो रिकमेंडेशन कर रहा है ना, तो आप उसको कहेंगे रिकमेंडेशन इंजन, रिकमेंडेशन इंजन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट लेवरेज हिस्टोरिकल ब्राउजर लॉग्स, आप जो कुछ सर्च करते हैं उसका एक हिस्टोरिकल ब्राउजर लॉग जो रहती हैं, परचेजिंग एल्गोरिदम्स, क्या क्या आपने खरीदा है, मैट्रिक्स फिल्टरिंग मॉडल्स इज predict user preference and present popular targeted product are formally classified as the recommendation engine, right? Product feed on Amazon or streaming suggest on Netflix kind of, so okay, अगर कोई चीज़ खरीदने वाले हैं तो देखो यूट्यूब के ऊपर वही चीज़ आपको अलग अलग दाम में बता देंगे कि भाई इतना सस्ता मिल रहा है, इतना महंगा मिल रहा है, जो भी है, ओके, इसको कहते हैं रिकमेंडेशन इंजन। Question number 17. The network device that can join several lanes and can also divide a network to isolate traffic problem is known as। अच्छा, जो नेटवर्क डिवाइस दैट कैन जॉइन सेवरल लेन्स, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस जो कि कुछ लेन जोड़ सकता है, कैन ऑल्सो डिवाइड एन नेटवर्क टू आइसोलेट ट्रैफिक प्रॉब्लम इज नॉन ऑफ। तो एक्चुअली ब्रिज ये काम करता है, ठीक है, नेटवर्क टू आइसोलेट ट्रैफिक प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रिज का ये काम है। इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। ए ब्रिज ऑपरेट at the data link layer of OSI, okay, OSI model. It is uniquely capable of connecting multiple local area lanes together or filtering, segmenting internal broadcast traffic into separate collision domains to isolate structural traffic, जो बैटल नेक्स रहते हैं उसको करने के लिए। तो ब्रिज इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फेमस पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इन मई 2026। अच्छा, वैसे प्रसून का शायद हुआ था इसमें। प्रसून जोशी वॉज द पर्सन, जो गीतकार हैं जिन्होंने काफी सारे फेमस गाने लिखे हैं। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया था, ओके, मई 2026 में, ओके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द acclaimed lyricist, communication expert and the current CBFC chairperson प्रसून जोशी to serve as the new chairman of प्रसार भारती, ठीक है। इससे पहले वो कहाँ के थे? CBFC चेयरमैन थे, है ना। सो इंडियाज स्टेट रन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी कौन है? प्रसार भारती है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है, द कामड़ी इज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेइटीज ऑफ विच ट्राइब? कौन सी जनजाति जो के देवता का ये प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट है कामड़ी नाम का, ओके। वैसे इसका दो ऑप्शन आता है, कुछ लोग भील बताते हैं, कुछ कोरकू बताते हैं। मेरे ख्याल से ये इसका आंसर
कोरकू है, बट इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। द कामड़ी इज ट्रेडिशनली हाईली रिवर्ड folk musical instrument associated intimately with the ritualistic worship of deities within the Korku tribe. The Korku communities reside prominently in the southern district of Madhya Pradesh, such as Betul, Hoshangabad, Khandwa. Okay, तो ये आंसर है, बट इसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। When was the धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तजगुआ लॉन्च इन मध्य प्रदेश? अच्छा, ये कब लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें कुछ डेट्स दी गई हैं। तो ये 2 अक्टूबर 24 को हुआ था। 2 अक्टूबर सभी में ही है। 2024 को 2 अक्टूबर को ये शुरू किया गया था। थोड़ा इसको जान लेते हैं कि ये क्या है। द सेंट्रल अम्ब्रेला वेलफेयर स्कीम्स धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA was officially rolled out across critical tribal blocks of Madhya Pradesh on Gandhi Jayanti, 2 October 2024, aiming to saturate infrastructural and socio-economic development gaps in indigenous villages. Okay, so question number 21. Where was Tatya Tope hanged by the British गवर्नमेंट? शिवपुरी में उनको फांसी दी गई थी ना। शिवपुरी इज द राइट आंसर। हाँ, डी, शिवपुरी इज द राइट आंसर। तात्या टोपे को, द तात्या टोपे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ 1857 रिवोल्ट, was betrayed by the राजा मान सिंह ऑफ नरवर का जो राजा था, उन्होंने बिट्रे कर दिया था, धोखा दे दिया उनको। He was captured by British forces in the forest of Paron and subsequently executed by hanging of 18 April. कब? 18 April 1859 at Shivpuri, where a majestic memorial stands in his honor today. Okay, आज उनके सम्मान में एक म्यूजियम भी है। The district benefiting from the Mahi project are, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं माही परियोजना से? माही परियोजना से तो 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, धार और झाबुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो द माही multi-purpose project built across the Mahi River directly irrigation के लिए and the supply vital drinking water resources to the tribal dominated drought prone western district of Dhar and Jhabua in the Madhya Pradesh. Next, question number 23, which we have, in which district is the Satpura thermal power station located? सतपुड़ा थर्मल पावर कहाँ पर स्थित है? तो ये बैतूल में है। So the Satpura thermal power station is located at Sarni in Betul district of Madhya Pradesh, और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1967 में as a joint venture project. It obtains its water supply from Tawa dam reservoir and coal resources from the nearby Patakheda coal fields. Next, question number 24. Which of the following
rivers of Madhya Pradesh flow towards the west? Which of the following rivers of Madhya Pradesh flow towards west? पश्चिम की तरफ कौन सी नदी फ्लो करती है? तो माही. Well, the Chambal Cane and the Tons also. Chambal Cane and Tons ये जो हैं वो northward की तरफ हैं, northward to eventually merge into the Yamuna Ganga river system. But the Mahi river flow westward. It originate in Dhar, cuts through Rajasthan, enter Gujarat, and drain cleanly into the Arabian Sea via Gulf of Khambat. ठीक है? Which of the following rivers form the boundary between Madhya Pradesh and Rajasthan and between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh? Which of the following rivers form the boundary between Madhya Pradesh and Rajasthan and between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh? कि कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है? तो आप जानते ही होंगे, चंबल वो नदी है. चंबल आप राजस्थान में भी है और इधर भी है, और ये आपके यूपी में भी है. तो ये बाउंड्री बनाती है. The legendary Chambal rivers form the natural north and northwest geographical boundary between Madhya Pradesh and Rajasthan before carving out the rugged ravine network. The demarcate the boundary between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh prior to its confluence with the Yamuna. Next, question number 26, which we have 26 question. We have, which of the following text was written by the Gond king Sangram Shah? गोंड राजा संग्राम शाह के द्वारा कौन सा टेक्स्ट लिखा गया था? सिद्धांत सुधा? या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके ऊपर. द पावरफुल घरा कटंगा गोंड रूलर राजा संग्राम शाह, जिनको अमनदास भी कहा जाता है, वॉज डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर ऑफ संस्कृत. बहुत बड़ी विशिष्ट विद्वान थे संस्कृत के. He authored the famous philosophical and literary treatise titled Siddhanta Sudha. Next, question number 27. Which freedom fighter from Madhya Pradesh obtained permission from Motilal Nehru for Jangal Satyagraha? कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू से परमिशन प्राप्त की थी जंगल सत्याग्रह के लिए? I guess so. Jangal Satyagraha permissibility was taken by Seth Govindas. Option C is correct answer. During the civil disobedience movement in the 1930, prominent nationalist leaders Seth Govindas alongside Pandit Dwarka Prasad Mishra actively consulted national leadership, including Motilal Nehru, to formulate guidelines for launching the highly successful Jangal Satyagraha across Jabalpur and Siuni region में. Okay, so the right answer is Seth Govindas, but Dwarka Prasad Mishra was also involved in that movement or the Andolan. Next, question number 28. 28 question क्या है? Which one of the following is not a component of e-Paraman? For example, National E-Authentication Service offered by the Department of Electronics and Information Technology, DAT, Government of India. Okay, so कौन सा गलत है इसमें, सही नहीं है? Not
कंपोनेंट ऑफ ई परमान का कंपोनेंट नहीं है। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यस ये तो है। सिंगल साइन ऑन, ये भी है। आधार बेस्ड क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, हाँ आधार डाल करके हम क्रेडेंशियल शुरू कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये तीनों तो हैं। पेन बेस्ड ई सर्टिफिकेशन एंड केवाईसी, नहीं ये नहीं है इसमें। किसमें? ई प्रमाण में। ई प्रमाण में पेन मतलब जो हमारा ये है आयकर के लिए, ये वाला नहीं है। परमानेंट अकाउंट, ये वाला नंबर। सो पेन बेस्ड ई certification KYC is not the right answer. So मतलब ये वाला D is the right answer. So we developed by the DEIT. Why e-Praman is the comprehensive national e-authentication framework offering pure core pillars. क्या क्या है उसमें? आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सिंगल साइन ऑन और आधार बेस्ड क्रेडेंशियल वैलिडेशन, वेरिफिकेशन भी है, वैलिडेशन भी है, ठीक है, वेरिफिकेशन, स्टैंड-अलॉन कस्टम पेन बेस्ड e-verification is handled another separate IT and income tax portal, and it is not direct architectural layers of the core of e-Praman framework, ठीक है, वो उसके लिए है, इसके लिए नहीं है। 29, question number 29, when the new Madhya Pradesh was formed on the 1st November 1956, how many districts were there in the Madhya Pradesh? There was 43 districts in the Madhya Pradesh on the 1st November 1956 when MP district separately created. Okay, so when the state of Madhya Pradesh was organized on linguistic lines on the 1st November 1956 by integrating Madhya Bharat, Vindhya Pradesh, Bhopal and the CP Barar, it commenced its administrative journey with exactly 43 districts. Next, question number 30, which we have. Question number 30 क्या है? Who was the Nawab of Bhopal? Bhopal state at the time of its merger into Indian Union. Actually, ये हमीदुल्लाह खान था. Hamidullah Khan was the Nawab of Bhopal at the merger of Union of India में जब हुआ था तो, which was the last Nawab of Bhopal state also. So Nawab Hamidullah Khan was the ruling monarch of Bhopal state during the India's independence, following a rigorous public hesitation and political negotiation. He signed the official merger agreement facilitating Bhopal's formal integration into the union state. कब किया? 1 जून 1949 को साइन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, who launched the cell broadcast system developed for disaster management in May 2026? किसने इसको आईटी ब्रॉडकास्ट सिस्टम को, तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया था क्या? In the May 2026, the Union Home Minister Amit Shah inaugurated the upgraded highly advanced cell broadcast system, जिसको हम CBS कहते हैं. This system enabled disaster management agencies to instantaneously beam emergency flash alert directly onto millions of mobile screen within vulnerable geographical zones during cyclone, floods and earthquake. अभी थोड़े दिनों पहले मैं आया भी था, आपको बताया तो इमरजेंसी वाला.
तो ये अमित शाह ने शुरू किया था. Which of the following countries has been designated the country of the year at BioFach 2026? Germany. Okay. So at BioFach 2026 held in Germany, जर्मनी में हुआ था ये. So the world's largest and most prestigious trade fair for organic food and agricultural commodities, India was officially honored as the country of the year due to its exponential growth in the organic farming, export and sustainable cultivation certificates. Okay, so भारत को सम्मान मिला इसमें. Next, question number 33. Which of the following yojanas aid manufacturing centered projects and service oriented businesses? 33. So संत रविदास स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना. अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्ड प्रोजेक्ट एंड सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस. तो मेरा ख्याल है कि ये बी हो सकता है पहला. तो उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, नहीं, ये तो नहीं होगा. भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, क्योंकि इसमें भी कुछ पैसे दिए जाते हैं व्यक्ति के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए. ओके, बट जो उद्यम क्रांति योजना है उसमें ये है कि व्यक्ति अपने लेवल पे ये शुरू करे, मतलब उद्यम के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली टू. सो आई थिंक बी इज द राइट आंसर. इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं अलग से भी. So the Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana is flagship state scheme designed to guarantee collateral-free bank loans ranging from the 1 lakh से लगा के 50 लाख तक for manufacturing center setup and the service enterprises, along with an attractive 3% की ब्याज दरों पे सबवेंशन ऑफ फॉर यंग एंटरप्रेन्योर, है ना. नेक्स्ट है 34. क्वेश्चन नंबर 34. Which sector has been proposed for maximum expenditure as per budget estimates 2025-6 in Madhya Pradesh? Okay. Which sector has been proposed for maximum expenditure as per the budget estimate? अच्छा, बजट के जो अनुमान हैं उसके अनुसार कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहा है 2025-26 के एस्टिमेट के अनुसार. तो which is actually education, sports, art and culture. इसको थोड़ा पढ़ते हैं. In line with human development goals and the national education policy, the MP state budget for 2025-6 prioritize human capital, assigning the largest chunk of the department expenditure to education, sports, art and culture. Next question number 35. 35 में क्या है? So given below are two statement. दो स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं. स्टेटमेंट एक क्या कहता है? अंडर प्रोविजंस ऑफ मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, the Secretary of Animal Husbandry Department has the authority to appoint a veterinary officer. क्या मध्य प्रदेश
2004 में जो गौवंश वध प्रतिषेध अभियान जो शुरू हुआ था, क्या इसमें सेक्रेटरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट ए वेटरनरी ऑफिसर? हाँ, ये बात सही है कि सेक्रेटरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास में ये पावर है कि वो उसके वेटरनरी ऑफिसर को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? वेटरनरी ऑफिसर सीम्स a person appointed as the veterinary officer under the section 3 of this अधिनियम। अब ये कानून तो मैंने नहीं पढ़ा है, जो ऑप्शंस हमारे सामने राइट हुए हैं उस हिसाब से ये सही स्टेटमेंट बता रहे हैं। इन द लाइट ऑफ अबव चोजन द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन both are correct. Statement A 1 and 2 are correct. A is the right answer. Okay. So next जो question है, in which district is the Harsi project primarily located in Madhya Pradesh? Harsi project primarily located in Gwalior. Gwalior is the right answer. So the historic Harsi project features a massive earthen dam built across the Parvati River. It is located primarily in the Gwalior district of Madhya Pradesh, supplying vital irrigation, water, canals to agriculture stretched across northern MP. ठीक है. Next question number 37 we have, in which district is Madho National Park located? Madho National Park शिवपुरी में है. So Madho National Park is situated in Shivpuri district of northwest Madhya Pradesh. Originally the private hunting grounding of Sindhya rulers of Gwalior. It was granted national park status in the 1958 and features the famous George Castle building at the highest peak. Okay. So next question number 38. As per the census 2011, which of the following districts in the Madhya Pradesh have the lowest and the highest areas in square kilometer? अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. अब इसमें क्या बोला? लोवेस्ट एंड हाईएस्ट एरियाज इन स्क्वायर किलोमीटर की सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किस का है? सबसे कम और सबसे ज्यादा. पहले सबसे कम बताना है, फिर सबसे ज्यादा बताना है. सागर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर भी ठीक ठाक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, धार भी है. तो भोपाल छोटा डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है. मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. भोपाल एंड छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें सबसे लोवेस्ट जो क्षेत्रफल है वो भोपाल का है और यहाँ पे जनघनत्व सबसे ज्यादा है. छिंदवाड़ा में ज्यादा क्षेत्रफल है लेकिन जनघनत्व कम है. ओके. बेस्ड ऑन द ऑफिशियल डाटा फ्रॉम द 2011 census record, Chhindwara hold the rank of the largest district in Madhya Pradesh by the total geographical area, जो 11,815 स्क्वायर किलोमीटर. Conversely, Bhopal recorded the lowest in the area among the given, which is 2,772 square kilometer. So like for example, Datia and Nivari are also very similar, but the matching pad which we are looking for, that which is the Bhopal and the Chhindwara, is the right answer, which is option C. Who released the Sindhi version of Constitution on 10th April 2026? अच्छा, सिंधी वर्जन भारतीय संविधान का किसने रिलीज किया था? हमारे माननीय
राष्ट्रपति महोदया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है वो 10 अप्रैल 2026 में सिंधी वर्जन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Srimati Draupadi Murmu formally released the official Sindhi language edition of the Constitution of India to make constitutional rights were accessible in the promote linguistic diversity under the 8th schedule. Okay. The next जो सवाल है हमारा वो है question number 40, which we have. Which one of the following mobile apps is conceptualized by the National E-Governance Division, Ministry of Electronics and IT, Government of India to improve ease of living by empowering citizens to avail major government services anytime, anywhere, with just a few clicks on the single unified mobile application. Actually, Umang is the right answer. उमंग में सभी तरह की सेवाएं जो हैं वो शामिल होती हैं स्टेट लेवल के लिए और नेशनल लेवल के लिए. ओके, सो उमंग इज द राइट आंसर. सो developed by the National E-Governance Division (NEGD) and the Mate Y Umang, a unified mobile application for the new age of governance, serve as single consolidated platform allowing citizens to access thousands of central and state government services such like EPF, PAN, and DigiLocker. So with very few clicks. Next question number 41, which we have. Which Chandel king built the temple of Jananath in Khajuraho? कौन से चंदेल राजा ने खजुराहो में जन्नानाथ टेम्पल का निर्माण किया था? जिनको हम उनको हम पार्श्वनाथ जी के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो धंग was the king, the magnificent Jannath temple often associated with the Parshvanath Jain cluster के थे, located at the UNESCO World Heritage Site of Khajuraho, was commissioned and constructed under the patronage of powerful Chandel monarch King Dhanga during the 10th century में. Next question number 42. Who was the commissioner of Jabalpur at the time of 1857 revolution? अच्छा, जबलपुर की कमिश्नर कौन थे 1857 की क्रांति के ड्यूरेशन में? So W.C. Erskine was W.C. Erskine was the commissioner of Jabalpur at the at time of 1857 revolt. When the first war of independence broke out in 1857, Major William C. Erskine was serving as the British commissioner of the Jabalpur, Sogar and Nerbudda territories also. He was responsible for directing counter-insurgency operations against local revolutionary forces also. Okay. So next question number 43. The tribal warrior Dalan Shah who was hanged by British in Sagar belong to which tribe? कौन सी ट्राइब से वो बिलोंग करते थे? कौन? Dalan Shah was from Gond tribe. So the brave revolutionary tribal chief and the warrior Dalan Shah, who fiercely recited British military advance in Sagar and Narsinghpur region during the 1857 conflict. Before being captured and hanged
belong to the indigenous Gond community. Okay. So next question number 44. By the year of 2025, the number of national highway passing through Madhya Pradesh. अच्छा, 2025 के अंत तक मध्य प्रदेश में कितने सारे नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू हो रहे थे? तो 46 the 46 is the right answer. So because in the because of we should thanks to rapid infrastructure development and the renew may bring the total numbers of district national highways sir crossing through Madhya Pradesh reach 46 by the year of 2026, significantly improving the interstate connectivity as well. Next question number 45. Question number 45. During which geological period was the Narmada Rift Valley formed through faulting? Okay, so during which geological period was the Narmada Rift Valley formed through faulting? अच्छा, नर्मदा रिफ्ट वैली जो है वो फॉर्म हुआ है किस जियोलॉजिकल पीरियड के ड्यूरेशन में? ओके, तो वो है क्रिस्टोसियस मेरे ख्याल से, है ना? क्रेटोसियस. The iconic Narmada Rift Valley was formed due to tectonic faulting and down faulting activities that peaked significantly during the Cretaceous period of the Mesozoic era, coinciding with the volcanic eruptions that formed the Deccan Traps as well. So next question number 46. In which of the following district is the Kavar or Kamar tribe found? Which of the following district is the Kavar or Kamar tribe? अच्छा, कमर ट्राइब जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? तो मेरे ख्याल से शहडोल इज द राइट आंसर. The Kamar and Kavar tribe who trace their legendary lineage to the Kauravas of Mahabharata were found in the eastern tribal belt of Madhya Pradesh, specifically in the district of Shahdol, Anuppur, and Sindhi, alongside with the Chhattisgarh border. Okay, so alongside the Shahdol, you should also be aware about the Anuppur. Siddhi is also the options. They might correct. Okay, so the Tantya Mama economic welfare scheme is related to the Tantya Mama economic welfare scheme जो है वो किससे related है? So एजुकेशन नहीं, एक्चुअली सेटिंग अप ए न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर के लिए तंत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम शुरू की गई थी. द तंत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड ए लो इंटरेस्ट लोन एंड फाइनेंशियल सब्सिडीज टू ट्राइबल यूथ अक्रॉस मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली टू हेल्प देम सेट अप the new self-employment ventures and micro industries. Question number 48. Where is the Raja Shankar Shah and the Kumar Raghunath Shah Tribal Freedom Fighters Museum located? कहाँ पर इनका म्यूजियम है?
तो वो जबलपुर में है, जबलपुर में ही उन्होंने लड़ाई की, संघर्ष किया। The state government established a museum dedicated to the Gond martyr King Raja Shankar Shah and his son Kumar Raghunath Shah in Jabalpur, where they were tragically executed by being tied to the mouths of cannons by the British in the 1857, है ना, तोप के गोले से उड़ा दिया गया था। Johar is the traditional folk theatre form of which region? Chahor is a theatre region which are actually belong to Bagelkhand. So Chahor is highly popular traditional ritualistic folk theatre format performed predominantly across the Bagelkhand region like Rewa, Satna, Siddhi during the major agricultural festivals like Deepavali. Next, and the last question of this paper. Suranti is a form of painting from which folk region? सुरंती फोक पेंटिंग स्टाइल जो है वो बघेलखंड से रिलेटेड है, बुंदेलखंड से रिलेटेड है। बघेलखंड एक्चुअली वो दूसरा है। सो सुरंती इज अ ट्रेडिशनल वॉल पेंटिंग एक्चुअली दीवार के ऊपर की जाने वाली पेंटिंग जो होती हैं, वॉल पेंटिंग आर्ट फ्रॉम नेटिव टू द बुंदेलखंड रीजन. It involves drawing intricate geometric patterns and icons during the Lakshmi Puja festival using local natural pigments. Okay, so this was our discussion for the Madhya Pradesh Assistant Professor exam. I hope you will find useful, especially for your preparation. So I wish all the very best for your exam and the preparation. So now we are winding this session. I hope we will meet again on next another question paper. Thank you so much. Have a nice day and